Hello everyone, welcome back. In previous session we talked about extent reports और extent report के हमने तीन अलग अलग वीडियोस में देखा कि किस तरह से रिपोर्ट जनरेट होता है और रिपोर्ट के साथ लॉग्स एंड स्क्रीनशॉट को कैप्चर करते हैं. नाउ आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एलियो रिपोर्ट. मैंने एलियो रिपोर्ट के बारे में आपको बताया था. अभी जो नेक्स्ट तीन वीडियो में बनाने वाला हूँ वो एलियो रिपोर्ट के होंगे. एलियो रिपोर्ट इज बेसिकली अ रिपोर्ट that is good in UI, look and feel. एंड बेस्ट पार्ट ऑफ योर एलियो रिपोर्ट इज दैट कि जिसमें आपको कोडिंग नहीं करना है. जैसे एक्सटेंट रिपोर्ट में हमने कैसे देखा कि आपको हार्डकोर लिखना पड़ता है, राइट? कि एक्सटेंट रिपोर्ट है, देन लाइक उसके लिए आपको एवरी टाइम डॉट लॉग और मेंशन करना पड़ता है. यहाँ पे एलियो रिपोर्ट में आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. चलो देखते हैं किस तरह से उस पर वर्क करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू थिंग्स. एक आपको एलियोर रिपोर्ट की डिपेंडेंसी चाहिए होगी मैवन के लिए. ओके. एंड दूसरा आपको एलियोर बाइनरीज डाउनलोड करनी पड़ेगी. उसकी बाइनरीज फाइल डाउनलोड करनी है और उसका एनवायरमेंट एक पाथ सेट करना होगा. ओके. सेम वे मैवन का भी आपको पाथ सेट करना होगा जो ऑलरेडी हमने कर दिया है. मैवन के सेशन में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि उसको कैसे, ये पाथ हमने किस तरह से उसका सेट किया था. बट एलियोर का पाथ भी आपको सेट करना है. चलो सिस्टमेटिकली देखते हैं कि किस तरह से करना है. आई एम क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट. आई एम क्रिएटिंग अ मैवन प्रोजेक्ट. Allure reports. Okay, fine. Dependencies हमको एक चाहिए होगी वेब ड्राइवर की. Okay, test ng, then web driver manager. Okay, and for Allure test ng. Okay, Allure test ng. I'll go to pom.xml. Ambient repository, Selenium. Latest version is 4.3.0. Okay. Then second, test ng. Test ng. All right. One more, web driver manager. Fine. And Allure test ng. So that is 2.18.1. Fine. So 4 dependencies आपको ऐड करनी है. One web driver, test ng, web driver manager and Allure test ng. Okay. Once it is done, just make sure कि कोई error नहीं है ना प्रोजेक्ट में, because sometimes if the particular jar file is missing, it might show you error over here. So everything is clean. Okay. Now second thing मैंने आपको क्या बताया, एनवायरमेंट वेरिएबल. एनवायरमेंट जो पाथ वेरिएबल है वो हमको सेट करना पड़ेगा. एक फर्स्ट दैट इज फॉर मैवन एंड सेकेंड फॉर एलियोर बाइनरी. मैवन के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था गाइस पहले, और पहले मैंने आपको बताया भी है. मैं वापस एक बार बता देता हूँ. जब मैवन आप डाउनलोड करोगे, सो यू विल सी अ जिप फाइल लाइक दिस. ओके. एंड व्हेन यू एक्सट्रैक्ट दिस, ये कहाँ से डाउनलोड करना है, आई कैन ऑल्सो शो यू दिस. Simply write down download Maven. Go to the link, and you can download this, right? You can download this Maven 3.8.6 bin.zip. ये आपको डाउनलोड करना है. Okay. So after downloading this, you need to extract this zip file.
सो यू कैन सी द फोल्डर लाइक दिस, और ये फोल्डर में आपको बीन फोल्डर मिलेगा। तो बीन का जो ये पाथ है ये आपको एनवायरमेंट वेरिएबल में सेट करना है। ओके, सो यू कैन राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एडवांस टैब, environment variables. In system variables area, simply scroll down, path, और path में आपको edit पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सेट करना होगा पाथ। ओके, आई एम यूजिंग विंडोज 8। अगर आप विंडोज 10 एंड विंडोज 11 यूज कर रहे हो गाइस, तो वो केस में आपको यूआई कुछ अलग आएगा, जिसमें आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है और आपको नीचे टेक्स्ट बॉक्स में उसका पाथ सेट करना पड़ेगा, right? But if you are a Windows 8 user, you can write like this. Okay, यहाँ पे आपको लास्ट में सेमीकोलन करके करना है। Windows 10 एंड 11 में सेमीकोलन नहीं आएगा। Okay, that is a different thing, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर लिया है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पार्ट। ओके, सो यहाँ पे आपको बीन का पाथ सेट करना होगा मैवन का। ओके, नाउ वंस इट इज डन, you need to download Allure binaries. Allure binary. Okay, so here is the link, github.com, and the version is this one, is the latest version 2.18.1. okay, scroll down, here is the file allure 2.18.1.zip. you need to click on this link, that will be installed, and once it is installed, you will see the folder like this, right? Allure 2.18.1, आपको इसकी zip file आएगी, आप उसको zip को unzip कर देना, and Allure 2.18 के अंदर एक bin फोल्डर होगा और ये आपको एनवायरमेंट वेरिएबल में सेट करना है। ओके, सो आपने मैवन डाउनलोड किया, मैवन की जिप फाइल, Allure बाइनरीज की जिप फाइल, ओके, दोनों को एक्सट्रैक्ट किया और दोनों के अंदर जो बीन का फोल्डर है उसका पाथ आपको एनवायरमेंट वेरिएबल में सेट करना है। सी दैट आई हैव ऑलरेडी डन दिस, सेलेनियम Allure बीन फोल्डर का पाथ। सो दो कॉन्फ़िगरेशन लेवल के चेंजेस करने हैं। वंस इट इज डन, यू नीड टू रीस्टार्ट योर मशीन, मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव मेड कॉन्फ़िगरेशन लेवल चेंजेस, सो समटाइम्स इट डज नॉट change it immediately, because machine restart करना पड़ता है। fine, once it is done, now we can create a script. okay, so यहाँ पे guys आपको कोई नॉर्मल, आपको कुछ अलग तरीके का प्रोग्रामिंग नहीं करना है। इट इज जस्ट लाइक अ बेसिक प्रोग्रामिंग, जो हम नॉर्मल स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके लिए अलर्ट, Allure रिपोर्ट के लिए अलग से प्रोग्रामिंग नहीं करना है। बट या मेक श्योर यू मस्ट हैव अ डिपेंडेंसी। ओके, Allure टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी उसमें होनी चाहिए। ओके, आई एम क्रिएटिंग टू पैकेजेस, one is test cases, okay, and I'm creating test case 1, test case 1, okay, public void test compare header text। गाइस मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं जो हमने एक्सटेंट रिपोर्ट में लिया था। ओके, बिकॉज पर्पस इज दैट मुझे आपको सिखाना है कि Allure रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। ओके, सो कंपेयर header text, so I want to compare this text. Okay, okay, WebDriver manager dot Chrome driver dot setup, and WebDriver driver is equal to new Chrome driver. Let's import it. Window dot maximize, timeouts dot implicitly wait, duration dot off seconds and 5. All right,
now driver dot get. Guys, अभी हम लोग यही कोड को डायनामिकली सेट कर देंगे. I'll create one base class, and in base class I'll create one method, and I will set this default code in base class. Okay, we'll do it sometime. Just hold on, पहले मैं 3 टेस्ट केसेस क्रिएट कर देता हूँ. Okay, so I want to get this text. Copy XPath, dot get text. Okay, string text. Okay, and I will write down assert dot assert equal assert true, no, assert true, assert equal. Okay, so actual result is this. Okay, and expected result is this. Fine. Okay, so this is my TC1. Okay, guys, I'm not writing any long logic over here because I just want to show you कि if the particular test case will be passed, then what will be the report, if it is failed and if it is skipped. Okay, तीनों condition हम देख रहे हैं, तो मैं इस पे time spend नहीं करूँगा. Okay, test case 2, I'm taking test case 2. So copy test case 1 and I will paste it in the same package, test case 2, right? And in test case 2, I want to compare welcome text. Welcome text. Okay, so the same common code is over here, and after that I'll click on log yourself in. Okay, right, email address and password. Okay, same way, password. This name is, I guess, password. Yeah, password. Okay, and the password is Unicode. And keys dot enter. Okay, then I'm writing thread dot sleep. No need to write this, but that's okay. Okay, once it is done, after login, I want to capture this text, this one. Okay, so there is a class greet user, class name, that is greet user dot get text, welcome text, and I want to compare with this. So I want to simply make it failed, so I'll simply this is Dvich is a name, and here I'm writing Unicode. Okay, so this is my TC2, test case 2, and test case 3 is simply I want to skip the test case, so I'll copy and I'll paste it over here.
After launching URL, I am writing this command: throw new skip exception. So test case will be skipped. Okay. So when you write this line, by default the test case will be skipped. Okay, so we have created 3 test cases. Now I'll create one package called base package. Okay, and I'll create one class that is called base init class, because this is going to be our parent class and all 3 test cases will be child classes. Okay, so in all 3 test cases we'll write down extends base init. Okay, control S, and control S. All right. Okay. So test case 1, test case 2 and test case 3, they all are child classes and the parent is a base init class. Okay. Now, can I do one thing? Can I do one thing? This 3 classes, ये तीनों क्लास में हमने ब्राउजर को लॉन्च किया है. Okay. So this is the common code. So can I copy and can I paste it over here? Can I copy and can I paste it over here? Public void setup, control V. Okay, and let's make it dynamic, right? And let's make it go global, and I'll simply write down over here. So this web driver is now globally defined, and I can write public as well as static, because public means I can use this driver anywhere inside my project, and by writing static I don't need to create an object of the class. Fine. So the problem is solved. Okay, in test case 2 I will remove this 4 lines. I'll remove the 4 lines. Okay, in test case 3 okay, so test case 1 is ready, test case 2 is ready, test case 3 is ready. Okay, now I'll create one XML file. For that I'll create one package called execution. I'll create one XML file. Final execution dot XML. Okay, and let's define them one by one. Suite name, that is Allure report. Okay, टेस्ट नेम, तो फर्स्ट टेस्ट केस कौन सा है? टेस्ट केस 1. क्लासेस क्लास, that is test cases dot test case 1. Okay, so this is the location, guys. Test cases dot test case 1. This is my tc1, tc2, tc3, test case 2, test case 2 and test case 3. Fine. So the XML file is ready. Okay, so before I run this, let me refresh the project and see some kind of changes. कि कुछ changes हुए हैं कि नहीं हुए हैं. Let me refresh the project. So it is like, it is as it is. Like we cannot see anything extra in this folder, in this like project. Okay, so
if I'm executing this particular XML file, test runner, so तीनों टेस्ट केसेस रन हो जाएंगे, टेस्ट केसेस 1, टेस्ट केसेस 2 एंड टेस्ट केस 3. 3 failures. Just a second. Guys, उसने ब्राउजर लॉन्च नहीं किया है, राइट? The browser is not even launched. What is the problem? We can see the error message and let's try to understand. WebDriver.get string in test case 1, test case 2. Okay, sorry guys. Uh, yeah, we need to write before sweat. Okay, so एक annotation मैंने set कर दिया, otherwise उसको पता कैसे चलेगा, because we have not called startup method yet. Okay, ये setup method को अभी तक हमने call नहीं किया है, that's why. And once it is done, we can also define public void close browser. Okay, so driver dot quit, that is after suit. Okay, so if I run the test case, if I run this test cases once again, now it should execute. Yes. Okay. All right. Now, if you see the execution, you can say one is pass, second is fail, and one is skip. Okay. Now, just refresh your project after execution. Okay, we have executed 3 test cases. अभी project को जब मैं refresh करूँगा, I can see one folder called Allure result. So guys, this will be generated automatically. For that, we have not written any code. The only thing, you must have a Maven dependency. Okay, allure-testng की एक dependency आपके pom.xml में होनी चाहिए. Okay, and if you have set the environment variable, automatically this report will be generated. But the problem is that this report is in JSON format, so that you cannot open it. आप इसको open नहीं कर पाओगे. Okay, you cannot open this file. So what you can do is just copy the path, copy the folder, copy the path of this folder, copy the path of this folder. This is the location, right? Just copy the location and you need to write one command. आपको एक command लिखना है command prompt में, and that command is what? Allure, serve, Allure serve, serve, and the location of your Allure results. That's it. Allure space serve space the location of your Allure results. Okay, so open command prompt and simply write down
Allure, SERVE, serve, and you can paste the location of your Allure results. Okay, and press enter and wait for the moment. See the magic? Wait, it will take some time and you can see the HTML report. See, it is generating reports. It is taking time, but now you can see that, hold on, yep, Firefox browser is launched and you can see one report, HTML report. Perfect. See that report is generated. Now you can see that three test cases we have executed, and over here there is a percentage ratio. Green, that is one test, 33%, 33% failed, 33% skipped. Fine. So environment, okay, there are different tabs are available, but guys, we have not used almost all the features of Allure report now. Okay, so I'll show you that in next two different videos. Okay, so how to use this category, suits, graph. Okay, you can see the graph, but you know, the best thing is that we can use different features of Allure report, and I can show you that you can see the different packages, suits. If you have created multiple suits, so you can, that particular part will be displayed over here. But see that look and feel is good, and the best thing is that in order to generate this, you don't need to write a code. आपको code लिखने की जरूरत नहीं है. Okay, you must have two things. Okay, एक Allure report की जो बाइनरी फाइल्स है उसका पाथ, दैट इज अ वन टाइम प्रोसेस. और कभी भी आप Allure रिपोर्ट जनरेट करना हो तो जैसे नॉर्मल कोडिंग करते हो वैसे नॉर्मल कोडिंग ही करना है. सिर्फ आपको एक Maven डिपेंडेंसी में Allure test ng की एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है, दैट्स इट. एंड व्हेन यू रन द स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली Allure report will be generated. Okay, so this is the Allure report. Okay, so you can practice this. Okay, in next two upcoming videos you will see how to utilize, how to write different commands and how to make this report very attractive. Thank you.